Hi my YouTube family, this is Melody from Home Garden and Fashion. I thank you so much for being here today. Today we're going to have a wonderful time together. We're going to make a dumpling, and this you could call rice cake. So it has rice, potato and egg, and this could be used as breakfast, lunch or dinner. This is quite filling and very tasty. So as you see, I have here one large potato cut up into small pieces and boiling. And मेरी YouTube फैमिली, आज मैं आपको दिखाऊंगी ये है राइस केक, पेठा भी इसको बोलते हैं। तो वो विंटर में बनाया जाता है यूजुअली, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। सो इसमें हम मिक्स करेंगे पोटैटो। तो मैं एक पोटैटो बॉईल कर रही हूँ और इसमें मिक्स होगा चावल। तो चावल कोई भी चावल ले सकते हैं, 1 कप, और उसको भिंगा दीजिए। अगर वो नहीं तो आप राइस पाउडर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास राइस पाउडर है। और मैंने यहाँ पे एक दिन कैसे बनाते, so I'm going to mix all these things together. I have 1 potato and I have 1 cup of rice flour, and I'm going to mix 1 egg. Now I'm going to mix all this, and after that I have to add some hot water to it, or I will just add this one to hot water after the water boils. So first I'm going to mix this one nicely and see. So इसमें मैं 1 कप राइस और 1 एग और 1 पोटैटो मिक्स की हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से आटा गूंदने की तरह इसको अच्छी तरह से मैं गूंथ लूँगी। So I'm going to mix this one and then let me boil some water. So now I have this pan. I'm going to heat up little bit of oil and put some cumin seed to it, and I'm going to add 2.5 cup of water to cook the rice flour. The potato is already cooked, and so cook the rice flour little bit. मैं ये एक पैन लगाई हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल देके और थोड़ा सा जो है जीरा देके मैं इसको राइस फ्लावर और पोटैटो और 1 एग, 1 अंडा, ये तीनों को मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा पानी भी देना है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और इसको गर्म होने दे देते हैं। So when the oil is hot, I'm going to add a little bit of cumin seed, just a little bit. I'm going to roast this cumin seed. So ये जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे, फिर उसमें हम पानी देंगे। 2.5 cup. I have 1 cup of rice and 1 cup of potato. तो 1 कप राइस और 1 कप पोटैटो है, तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे 2.5 cup water.
तो देख ले कि जीरा किसके भून गया है। तो जीरा जो है ठीक से भून गया ना, going to add this water to it, and now I'm going to bring this to a boil before I add the rice flour, and bring it to a boil. Put a cover on it. So I'll just let it boil. So here I have the rice flour and potato and 1 egg mix. Now to this liquid, I'm going to add a little bit of salt. And that's the only salt we're going to add. We're not going to add any more salt. So I'm going to add like this much salt. You add to your taste. You don't want to make it too salty. So मैंने थोड़ा सा ही सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करें। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि जो वाटर है वो काफ़ी बॉयल हो रहा है। नाउ यू कैन सी द वाटर इज़ रियली बॉयलिंग। तरह की जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया, एंड उसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ। टू दैट आई एम गोइंग टू ऐड द राइस फ्लावर एंड द पोटैटो एंड द एग। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन। इसको ऐड करके इसको थोड़ा सा कुक होने दे दे। And I'm going to add it and cook a little bit. So we have to make sure all this water is dried up. Right? And I've been working with it. So, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ड्राई हो चुका है। ऐसे इसको घुमाते रहना है, नहीं तो फिर ये लग जाएगा। इसको छोड़ नहीं दे सकते, और ये एकदम धीमी सी जो है फ्लेम में कर रहे हैं। As you can see the flame is very low, and I'm going to have to do this continuously so it doesn't get stuck. And then I'll have to add little bit of rice flour to give it a save. So I have a mixture over here, breadcrumbs, basil leaves, some spices, and you can add a pinch of salt or don't. So the butter is unsalted and we added salt previously. So इसमें ब्रेड क्रम्स है एंड बेसिल लिव्स है, और थोड़ा सा कुछ भी स्पाइसेस आप डाल दीजिए। काला जो होता है काला मिर्चाई और कुछ जो आपको मन है थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। और इसको देख के हम इसको आई एम गोइंग टू जस्ट रोल इट इन दिस। And fry it like this. ऐसे गोल भी कर सकते हैं, चिपटा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो बटर में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं। बटर में करने से एक अच्छा सा स्मेल आएगा। जब हमने इसको पानी में कुक किया था तो ये पूरा कुक हो गया था, और इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। When we cook in the water, it was totally cooked and it doesn't need to be steamed anymore.
जैसे इसको पलट भी दीजिए थोड़ा. Make sure your flame is low, not too high. We're going to just brown the body and just mix with all the spices. Then I'm going to add this extra butter. So like this, you have to just fry a little bit outside. Very small amount of butter. It's not a deep fry or anything. It's just browning the outside so it tastes good. And you add your spices a little bit and basil leaves. Just gives a nice aroma. Hi, thank you so much for being here today. I hope you enjoyed the video. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this video. Thank you. May God bless you all.